Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel which is by GSY. Okay students, देखो हमें previous class से पढ़ी थिलु magnetic field intensity due to a bar magnet. Okay, case 1 टा कोन थिला? Case 1 टा थिला at any point on the axial line. Okay, so आज हमें देखिबो न्यू टॉपिक पर case 2 देखिबो. Okay, case 2 रो ना हला कोन? At any point on the equatorial line. Okay, देखिबा case 2. Case 1 तो सरी थिला. तो देखो case 2 जो मैंने वीडियो देखी ना काइंडली समस्त वीडियो देखी दे केस 1 टा कोन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. केस 2 होची देखो एट एनी पॉइंट ऑन द व्हिच लाइन इक्वेटोरियल लाइन एटा कोन बाहर कर छिडा एटा बाहर करा जाउची मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट. तो केस 1 कोन थिला? केस 1 टा थिला at any point on the axial line. What is case 2? Case 2 हला at any point on the equatorial line. Okay, तो फर्स्ट हमें देखिबा डायग्राम. ओके, समस्त डायग्राम देखो और डायग्राम टा ड्रा करा. ओके, at any point on the equatorial line. Suppose हम नाम बोले बार मैग्नेट. So this is the bar magnet. Okay, suppose this is the bar magnet. देखो okay, this is the bar magnet. It has north pole, this is the south pole. जानि छ पॉइंट दे देटा. This is the north pole, this is the south pole. Okay, center हला O is the center. Join this is the south pole. Okay, एटा को join कर दियो. एटा हो center. O is the center. बैठले O is the center. Okay, then कोन हबो देखो एठी लेंथ हबो 2L. डाइपोल लेंथ केते 2L. तो कोन हबो ON टा केते? ON टा हला L देखो. अगर कोरा हिच ON टा L, then ON टा हला L, then what is OS? OS टा भी L हबो देखो. L plus L कोन हला 2L. ON टा हला L, OS टा हला L. L plus L 2L. Okay, then P is a point. लिखि दिबि तो जेटा केस 2 एठी लिखि दो केस 2. केस 2 देखो at any point on the equatorial line. At any point on the equatorial line. Okay, एठी कोन हबो देखो एठी P is a point नबा. Okay, P is a point. तो join OP. ए P टा कोड अछि? ए P टा अछि देखो इक्वेटोरियल लाइन रे अछि P पॉइंट टा इक्वेटोरियल लाइन. टे लाइन टू बढ़े देथौ. Okay, then join PN. PN को join करिवो. Then join PS. Then PS को join करिवो देखो. ई लाइन टू बढ़े देबो. एटा होची PK. और होची PY दे देबो. This is the PY. इटुटे लाइन टा आनी देबो. So this is PX. Okay, PX. इटी कोन हबो देखो. This is the north pole, this is the south pole. OP rotation R. Okay, एटा R हला एटा L हला. एटा कोन हबो? एटा R square plus L square root over कोन पाइना? पाइथागोरस थ्योरम. एटा भी से भलिया R square plus L square root over कोन पाइना? एटा होची परपेंडिकुलर होची बेस. तो कोन होय रूट ओवर? एटा होची तो Pn टा होची हाइपोटेन्यूस. तो कोन हबो? P square plus B square, that is R square plus L square. Perpendicular square plus base square, that is R square plus L square. Okay, एठी कोन हबो? एठी PY देखो. PN माने PY होची देखो एटा को कंपोनेंट? एटा नॉर्थ पोल पाइन. तो एठी हबो देखो Fn सब परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट. Fn sin component sin theta. Fn sin theta. तो एटा कोन हबो? यार को देखो Fs sin theta देखो. ए लाइन टा हला along PO जोटा. PY टा हला कोन? Fn sin theta. PO टा कोन हला? Fs sin theta. Fs. This is the Fs. Fs sin theta. Okay, so एटा कोन हबो? Fn cos theta. एटा कोन हबो? Fs cos theta. along px से कोन हला? Fn cos theta along px से फिर Fs cos theta. cos component. सब मन रखो व्हाट इज cos? cos माने होची हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. व्हाट इज sin? वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, द हॉरिजॉन्टल एटा जो वर्टिकल एटा को नै जो डायरेक्शन ऑफ एटा साउथ पोल माने एटा दे दियो Fs वेक्टर. इस द Fs वेक्टर फिर एरो मार के ऐड Fs वेक्टर. एटा कोन? इस द Fn वेक्टर pk. लाइन टा देखो Fn वेक्टर फोर्स Fn वेक्टर. ओके, एटी p रे कोन? F टा होची रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, F टा कोन? F टा नै जो सपोज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. M फॉर मैग्नेटिक. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. डायग्राम तो समझ देखिलो. এটা হচ্ছে নর্থ পোল,
दिस द नॉर्थ पोल साउथ पोल डाइपोल मान डाइपोल लेंथ 12 ओएन टा हला l ओएस टा हला l ओपी टा हला कोन r देन py रे कोन fn sin थीटा एलोंग po रे हला तो मोर fs sin थीटा देन along px fn cos theta along px fs cos theta this is the fn vector this is the fs vector okay एटी थ्योरी कोन हबो देखो थ्योरी हबो let us consider a point p let us consider a point p नहीं let us consider a point p situated at a distance r from the equatorial line from the center भी कह पड़ा from the equatorial line let us consider a point p situated at a distance r from the equatorial line from the center o देखो let us consider a point p situated at a distance r from the equatorial line at a distance r on the curve at a distance r on the equatorial line okay on the equatorial line from the center o okay at any point on the equatorial line theory देखिए दिए once again let us consider a point p situated at a distance r on the equatorial line from the center o ठारू then magnetic length कितने आ जाए magnetic length is equal to suppose that is 12 is the magnetic length देखो 12 next कोन करा जीवो एठी हेबो देखो np what is the value of np रो value हेबो देखो r square plus l square root over okay r square plus l square root over then what is sp रो value हेबो देखो r square plus l square root over आगु लिखि देथो what is np तर value केते root over of r square plus l square what is sp root over of r square plus l square okay students next हमें देखिबा fn vector next fn vector माने कोन fn vector माने कहूची देखो magnetic field intensity at point p लिखला at point p due to co-pole north pole पाई देखो due to north pole पाई okay fn vector माने कोन magnetic field intensity at point p due to north pole पाई तो what is fn vector formula कोन हबो what is fn vector आगु जानि छ mu 0 by 4 pi pole by m by कोन हबो एटा होजी तमर np रो स्क्वायर हेलो कोई डायरेक्शन along pk देखो along pk आर पे along pk ए डायरेक्शन रे np रो स्क्वायर along pk देखो fn वेक्टर फार्मूला कोन हला mu 0 by 4 pi m मान होजी पोल स्ट्रेंथ np डिस्टेंस along pk व्हाट इज द np रो स्क्वायर कोन हबो देखो दैट इज fn वेक्टर इज इक्वल टू mu 0 by 4 pi m by np रो स्क्वायर केते that is np रो एटा स्क्वायर मान उठी जीवो that is r square plus l square उठी गला along pk np लेबे दोछि देखो एटा इक्वेशन 1 देथिबो गिव इक्वेशन नंबर 1 मन रखितो स्टूडेंट्स fn वेक्टर फार्मूला कोन mu 0 by 4 pi m by r square plus l square रो उठी गला जे स्क्वायर अछि इक्वेशन 1 एटा मन रखितो स्टूडेंट fn वेक्टर नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज fs वेक्टर fs वेक्टर होछि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point p due to एटा कोन हबो साउथ पोल पाई हिजबो due to साउथ पोल देखो स्टूडेंट्स व्हाट इज fs वेक्टर होछि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point p due to साउथ पोल देखो fs वेक्टर होछि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point p due to साउथ पोल क्लियर स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज fs वेक्टर फार्मूला दैट इज fs वेक्टर फार्मूला हबो देखो mu 0 by 4 pi constant by m by कोन हबो दैट इज sp रो स्क्वायर डायरेक्शन कोन इज डायरेक्शन along ps एटा मन रखो along ps डायरेक्शन ps आडको आछे along ps एन हो जे fs वेक्टर दैट इज mu 0 by 4 pi very easy आराम से जानि परबो m by what is sp r square plus l square रूट उठी जीवो along ps इक्वेशन 2 देथा एबे हमर काम अछि इक्वेशन 2 रो काम अछि दिस इक्वेशन नंबर 2 एटा 1 एटा 2 तो लिखि देउछि 1 और 2 देखो समान इक्वेशन 1 ता फार्मूला भी सेम एटा पोल m by r square plus l square एबे कोन हबो देखो एबे हम लिखिबा कंपोनेंट माने कोन कंपोनेंट छै देखो एटा कंपोनेंट fn sin थीटा fs sin थीटा fn cos थीटा fs cos थीटा तो कोन हबो नेक्स्ट इक्वेशन दुटा रख लिखि देउछि ओके इक्वेशन 1 2
मन रहुछि हला इक्वेशन 1 टा थे देखो fn फैक्टर इज इक्वल लिखि दोछि एठी म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर along pk ठीक है लंबा हबो किंतु इजी along pk ओके से बडा व्हाट इज fs फैक्टर इक्वेशन 2 टा म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय एटा कोन हबो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एटा हबो along ps इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो along ps ओके देखो नेक्स्ट resolving fn factor and fs factor into components resolving fn factor and fs factor into component मान तैयारी हला fn factor भी component तैयारी कला fs factor भी component तैयारी कला फर्स्ट में देखियो नंबर 1 fn factor कोन तैयारी करछि fn factor टा होची देखो फर्स्ट fn factor कथा लिखिबा fn factor फोर्स नॉर्थ पोल पाई fn factor फर्स्ट कोन अछि देखो फर्स्ट अछि fn cos theta along what along px what is the formula of fn value पाई छादे पुट कर दियो it is fn is equal to put this mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta ओके along px लिख देबा along px देखो से भलिया नंबर 2 आ कोन fn वेक्टर कोन तैयारी करछि fn वेक्टर कोन तैयारी कला फर्स्ट फिर fn sin theta क्वाडे along py देखो py रे कोन होछि fn sin theta व्हाट इज द फार्मूला ऑफ fn इट इज mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta into sin theta है into sin theta along quad along py देखिए स्टूडेंट्स fn cos theta along px fn sin theta along py एटा fn और fn रो फार्मूला पड़ला एटा fn रो फार्मूला इक्वेशन रे पाइछ एटा दिस इज cos theta fn जे cos theta जे sin theta रहिला देख नेक्स्ट हम देखिए fn रो सरला नेक्स्ट हम fs लिखिबा नेक्स्ट fs वेक्टर कोन हला देख fs वेक्टर टा फर्स्ट दैट इज fs cos theta along quad along px सेम अछि एटा fs cos theta along px fs रो फार्मूला पड़ला केते mu 0 by 4 pi m by r square plus l square along px ठीक अछि along px चेंज होबनी नेक्स्ट एटा हेबो कोन fs sin theta along quad हेबो along po हेबो देखो along quad हेबो along po यार को हेबो एरो मार यार के along po कोन fs sin theta व्हाट इज द फार्मूला ऑफ fs द फार्मूला होछि देखो mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into sin theta along quad along po हेबो द along po ओके स्टूडेंट देखो fs cos theta along px along px जानि छ देन fs sin theta along po ओके mu 0 by 4 pi होते मोर fs रो वैल्यू टा भी fs रो वैल्यू cos theta sin theta along px along po ओके एबे कोन हबो देखो जेहेतु गुड लाइन रे समान अछन गुड सेम लाइन ऑफ एक्शन हेटा कोन हबो एटा fn sin theta और fs cos theta कैंसिल हो जिवो कैंसिल इच अदर से विषय लिखिबा हमें नेक्स्ट द कंपोनेंट द क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट देखि दियो समझते द कंपोनेंट along py रे कोन अछि fn sin theta the component along py fn sin theta and the component along po along along हला along po कोन fs sin theta कोन हबो माने r equal and opposite r equal and opposite force जानि छै equal and opposite so they कोन हेबे cancel each other cancel हे गेले देखा कैंसिल करछु the component along py एटा py देखो the component along py fn sin theta and the component along po fs sin theta are equal and opposite so they cancel each other
तो कौन रहिला ओनली देन इफ एफ वेक्टर इज इक्वल जानि छ कोन रिजल्टेंट बा टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एफ वेक्टर इंटेंसिटी एट पॉइंट पी रे देखो एफ वेक्टर माने कोन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी रे तो कोन है फार्मूला तो फार्मूला हे जिबा देखो that is what is the vector formula कोन what is the vector that is इधर को ऐड कर देबा इधर कैंसिल हो गेल दुईटा एटा ऐड हबो that is fn cos theta plus fs cos theta okay fn cos theta plus fs cos theta along what हबो along ऐड कर डायरेक्शन along px देखो वेक्टर इज इक्वल कोन fn cos theta plus fs cos theta along px डायरेक्शन एठी वैल्यू माने जानि छ समस्त बेस करा हला what is fn cos theta what is fs cos theta value put this f vector is equal what is fn mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta plus fs value kete same mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta और डायरेक्शन कोन along px देखो mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta plus mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta r square plus l square into cos theta along px ऐड करले कोन हेबो दैट इज 2 into समान टर्म 2 into mu 0 by 4 pi m into r square plus l square into cos theta इक्वेशन by along px इक्वेशन 3 दे दियो ओके इक्वेशन 3 देखो ए वेक्टर इज ऐड कर समान टर्म 2 into हे जिवो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 into mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into cos theta along px नेक्स्ट हम कोन करिबा एबे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos theta बार कर इन ट्रायंगल OPN रे हला OPN इन ट्रायंगल OPN ट्रायंगल व्हाट इज cos theta फॉर्मूला b by h बेस बाय हाइपोटेन्यूस एटा होची बेस एटा होची हाइपोटेन्यूस एटा कर्ण जोटा बेस आपन कोन हला दैट इज b माने कोन दैट इज OM व्हाट इज h NP बा PN NP कहि पारो then cos theta is equal to cos theta is equal to what is ON L by NP रा वैल्यू केते r square plus l square root over बाइड को हाफ भी लिखि परिबा हमें root over माने हाफ तो एई cos रा वैल्यू कोन करिबा ए इक्वेशन 4 कर दे इक्वेशन 3 अछि देखो इक्वेशन 4 रा वैल्यू इक्वेशन 3 रे पुट करो इक्वेशन 4 रा वैल्यू इक्वेशन 3 रे पुट दिस cos रा वैल्यू केते हला ON by NP दैट इज L by r square plus l square root over r square plus l square root over next using equation 4 in equation number 3 रे पुट कर दे we get put कला पर कोन मिलबा देखो पुट कला पर that is f vector is equal to 2 into mu 0 by 4 pi m by r square plus l square into कोन हबो cos थीटा जाय कोन पुट करबा एटा पुट करबा एटा इक्वेशन 4 अछि हला into cos थीटा अछि cos थीटा जाय पुट करबा तमे l by r square plus l square रो हाफ कोन पे हाफ लेखिनी रूट ओवर माने होछि हाफ रूट ओवर माने कोन एटा रूट ओवर एटा हाफ सेम कथा okay next solve this that is f vector is equal to 2 ba 2 टा भितर मल्टीप्लाई करिवो mu 0 by 4 pi 2 ml by एटा कोन हबो एटा 1 एटा होछि हाफ 1 plus हाफ के 3 by 2 एड हे जिवो कतटा r square plus l square रो 3 by 2 कोन पे 1 plus हाफ के देबो 3 by 2 इक्वेशन के दे 5 दे दे इनडे फार्मूला अछि देखो व्हाट इज 2 ml 2l into m माने डायपोल magnetic length into pole strength then some magnetic moment लिखिए 2 ml is equal to m factor हला माने कोन दैट इज magnetic moment magnetic dipole moment पुट करो कोन f factor is कोन f factor is equal to mu 0 by 4 pi m factor by r square plus l square 3 by 2 एटा along px लिखिबा हला along px सब along px मेंशन करिवो इक्वेशन 6 दे दे along px नेक्स्ट बे कोन करबा देखो एटा हो किछ ने पावर 1 अछि देखो 1 प्लस हाफ कोन 3 by 2 2 ml माने जे m वेक्टर डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेक्स्ट एबे कोन करबा एबे देखो इन केस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल l रा वैल्यू वेरी स्मॉल h कंपेयर टू r नेगेट करबा जानि छ इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल in case of a magnetic dipole
the value of L dipole, the value of L is very small as compared to R. In case of a magnetic dipole, the value of L is very small as compared to R. So neglecting the value of L, neglect करिबो L neglect कौन हबो, equation 6 becomes, okay, equation 6 टा कौन हबो, equation 6 becomes with answer बाहरिबा देखो, in case of a magnetic dipole the value of L is very small as compared to R, so neglecting the value of L, equation 6 becomes कौन हबो देखो, equation 6 टा हे जिबा देखो एटा ए L रा वैल्यू 0 पुट करो तो कौन हला देर F factor is equal to mu 0 by 4 pi m factor by r square रो 3 by 2 तो कौन L square में 0 r square रो 3 by 2 रहबो r square रो 3 by 2 2 to cancel along px हला तो कौन हबो दैट इज F factor is equal to mu 0 by 4 pi m factor by r cube along px, এটা হচ্ছে आंसर, this is the answer देखा along px लिखिबो इक्वेशन जहा दोइथ दियो 6 दे देबो, ओके f factor is कोन mu 0 by 4 pi m factor by r cube along px, এটা कोन हबो इक्वेशन 7 is the expression for magnetic field intensity हला due to a bar magnet at any point on the equatorial line, ओके स्टूडेंट कोन लिखिबो इक्वेशन 7 is the expression for magnetic field intensity due to a bar magnet at any point on the equatorial line, ओके स्टूडेंट्स এটা হচ্ছে magnetic field intensity, okay intensity, okay মানে লিখি চলিব ইকুয়েশন 7 টা কোন বুঝি যায়, ইকুয়েশন 7 হচ্ছে magnetic field intensity due to a bar magnet at any point on the equatorial line, এটা হচ্ছে this is the final answer, this is the final answer, okay students next আছে আকু পড়িবা, okay students যদি এই ক্লাস যদি ভাল লাগুছি মানে কাইন্ডলি লাইক करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थे बेल आइकन को दबाई दियो, ओके स्टूडेंट्स समस्त को शेयर कर दियो, এটা वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसी पारे, ओके ओके स्टूडेंट्स बाय।